the systematic record of the specific quantity. Now who is coming? Tanu Dikshit. So just see students, so तनु आप कौन से सब्जेक्ट से हो? So that means, हाँ भाई तनु, are you getting my voice? Tanu Dikshit. जी sir. Anushka Singh. You are from Hindi or English medium? So look at this one here. ठीक है, अब हमने जब इसकी टाइप डेटा की बात करी तो आप डेटा को यहाँ पे टाइप के बारे में भी डिस्कस करते हैं कि डेटा कितने टाइप के होते हैं. Data are of the qualitative and the quantitative. Just these are okay. Means the data can be divided into two parts: qualitative data and quantitative data. And what is the difference between them? What is quantitative data? So just these data means it is possible to quantify and not merely observe them. They can be interpreted numerically and calculations can be based on the values of like their different values. Okay, so these can be interpreted numerically and the calculations can be made on these data. While what is qualitative data means, some features or the attributes reflect them. They show some descriptive descriptions that can be observed but cannot be measured or be computed. Okay, so just these show the descriptions but cannot be observed and cannot be measured or be computed numerical. Okay, so give the examples of quantitative data and qualitative data. Is anyone like to give the examples of this quantitative and qualitative data? Sir, qualitative में हम बता सकते हैं age. और सर बोल age and this cost, color. Okay, and qualitative data में? Qualitative में हम दे सकते हैं qualitative data में आप क्या क्या दे सकते हैं? आप means which kind of data can be? सर इन क्वांटिटेटिव जब हम किसी चीज को क्वांटिफाई करेंगे तो हम उसको न्यूमेरिकल फॉर्म में लेंगे, और अगर कोई क्वालिटेटिव है तो वी विल टेल अबाउट कि किस उसका जो रेंज ऑफ सॉरी लाइक कि ये कितने टाइम ड्यूरेशन का है, कैसा है, कब तक है. इट विल नॉट बी इन न्यूमेरिकल फॉर्म. दैट एंड द अदर वन विल बी इन द न्यूमेरिकल फॉर्म. सर क्वांटिटेटिव में हम हाइट दे सकते हैं, वेट दे सकते हैं. So can you give some examples for this? For quantitative और qualitative data. क्वालिटेटिव डेटा के लिए मैंने दी ना आपको वो क्या कहते हैं एज दी. नहीं, that is for the quantitative, is it? And for the qualitative data, qualitative data के लिए बताइए. Sir, quantitative quantitative will be on the basis of number and quality will be like the color complex. For example, there are two different races. We will be quantifying on the basis of their color, more darker, less darker.
So It will be like that. can you just analyze the qualitative data as well, दीपक? क्या कर सकते हैं आप इसको भी analysis? Sorry, sir. Pardon your question. My question is that just can you analysis the this qualitative data as well? Sir, we can, but we cannot that we cannot quantify it. We can analyze, but we cannot quantify it on the basis of this quality. Okay, so We can just analyze that data also too. you have given some examples of this one here, qualitative data. Okay, like intelligence. Okay, like the beauty. Okay, so many different examples can be seen just which belongs to the quality purpose or the qualitative data. Okay, and the calculations can be just actually we are not having the just their numerical values, but still they can be analyzed. Is it? हम कर तो सकते हैं ना उसका पे एनालिसिस यहाँ पर क्वालिटी फॉर्म में. Yes, sir. We can do that. We have to convert that data into the quantitative form, or on the like basis of that also. like you can see just in the today's scenario, just universities and colleges and the further departments. Okay, these are given the just NAC ratings. Okay, so I think all you know that here what is NAC rating. जानते हो आप लोग सब? Are you aware with this or not? NAC ratings. Not exactly, sir. But it is like on the basis of it's like quantifying all the things like on the of a university like that. Actually, just it is a level of grading, okay, Huh. and it is a quality level of grading, and by which we can just evaluate, okay, the level of just like the grading system for the students. In the similar way, colleges, different departments in a university or the college, and means many universities can be analyzed. Okay, like आपने सुना होगा जैसे A plus कैटेगरी होती है, A कैटेगरी यहाँ पर A B plus B कैटेगरी. These are just assigned to these universities by NAC accreditation. Is it? क्या भारती सुना है ना आपने? I agree, sir. जिस तरह से हमारे पास प्रोडक्ट्स होते हैं ना, प्रोडक्ट्स के लिए हम जो डेली के प्रोडक्ट्स यूज करते हैं यहाँ पर, उसके लिए भी हमारे पास में ISO रेटिंग्स होती है ना ISO रेटिंग्स यहाँ पर. इन द सिमिलर वे हमारे पास में जो आपका एकेडमिक लेवल है, उसके लिए भी हमारे पास में ग्रेड ये आपका जो क्वालिटी पर्पज से रेटिंग्स होती हैं. आपने कभी जर्नल्स के बारे में सुना होगा? एस्कोपस जर्नल्स होते हैं, UGC जर्नल्स होते हैं, SCI जर्नल्स होते हैं. हैव यू लिसन्ड और नॉट? Sir. Yes, सो sir. SCI जर्नल्स में भी हमारे पास में क्या होता है कि हमने उसको 4 डिफरेंट मोड्स में डाल रखा है, Q4, Q3, Q1, Q2 एंड Q1. So the first those journals which are just highly reputed. Okay, so these are no, जैसे स्प्रिंजर और एल्सेवियर के बहुत सारे जर्नल्स होते हैं हमारे पास में जिनको Q1 के कैटेगरी में रखा गया है. ऐसे ही फिर उसके कुछ थोड़ा सा नीचे जो जर्नल्स है वो Q2 के कैटेगरी में डाला गया है हमारे पास में. तो इन दिस वे दीज रेटिंग्स हैव बीन मेड, और उसके बेसिस पे लाइक दीज सच काइंड ऑफ डेटा जस्ट बिलोंग्स टू, है ना, जस्ट दिस सच डेटा बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ क्वालिटेटिव डेटा. इज इट क्लियर? इज एनी डाउट अनुष्का, तनु, भारती? Okay, so next just we are going to discuss about so these are the data, and now we see what are the just what do you mean by data collection. Depending on the source, it can classify as primary data or the secondary data. Okay, just depending on the source. So according to source level, we can further divide our data on the two bases. One is called primary and second is called secondary data. Is it? So primary का मतलब कि just we have discussed already yesterday. These are the data that are the collected for the first time by an investigator for a specific purpose. Is it right? So means Yes, sir. primary data means are the original data, and these are the data that just are collected for the first time.
by the investigator, okay, or for the particular any researcher with some specific reason. The primary data means are the pure data in some that no statistical operations have been performed on these kind of data. Just these are collected by the researcher himself or herself. Okay. So secondary data means these are the impure data, and impure means in what sense we are saying these are the impure data. Just बोलिए students. Now you see the definition just given on the board on this here screen, and one second students, wait. Okay. Yes, now you can see what is meaning of the secondary data. So secondary data means these are the data just that are sourced from the some place that has originally collected it, and it means these are the this kind of data has already been collected by someone else, means someone by someone else, some researcher or some investigator. Okay, and in the past and is available either in the published or the unpublished form. Okay, so an example means so many examples you can give here like books, journals, uh, the data given by the different websites. Okay, and these are just the data. So now we are giving here one thing, that is the collection methods. Okay, you can see. आप बता सकते हो कौन कौन से मेथड्स होते हैं हमारे पास में कलेक्शन के, कौन कौन से मेथड से अपन डेटा कलेक्शन कर सकते हैं यहाँ पे, प्राइमरी को और सेकेंडरी को. सर, तो प्राइमरी डेटा जो क्लासिफाई करते हैं, जैसे हम डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू से कलेक्ट कर सकते हैं और इनडायरेक्ट इंटरव्यू, ओरल इंटरव्यू के थ्रू भी हम उसको कलेक्ट कर सकते हैं, या किसी भी इंफॉर्मेशन को कोई भी क्रॉसपेंडेंट पर्सन से हमने लिया हुआ है. एग्जैक्टली. सर्वे सो से भी, हाँ भारती, यू स्पीक. से भी सर. सो लाइक यू सी, बिकॉज आप में से शायद बहुत सारे स्टूडेंट जो मैनेजमेंट से रिलेटेड हैं यहाँ पर या फार्मा के भी हैं, जो सर्वे से रिलेटेड काम करते हैं यहाँ पर. आई थिंक दोज डेफिनेटली यू विल जस्ट सी by what manner, by what methods here you are going to like collect your data. So some of these here like surveys, observations, experimental study, okay, सर questionnaire, इंटरव्यूज pers- क्वेश्चन. exactly, personal interviews. Okay, these are the some like ways by which we can collect the primary data. And while the secondary data just can be collected by the publications, government government publications, websites, books, एजेंसी. journals, आर्टिकल्स. किसका देखिए एक बार ये आवाज आ रही है, थोड़ा सा नॉइस आ रहा है, म्यूट कर लो आपको. हाँ, म्यूट कर लीजिए एक बार. So these are the like the collection methods for the primary and the secondary data. Okay. So my question is that because you are the research scholars of different fields, so in every like research, is it required to just like the collect the data for like here हम जो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर वो प्राइमरी और सेकेंडरी की कैटेगरी में रखा जाए अपन. जैसे मान लीजिए आप में से कोई लाइक कोई मैथमेटिक्स से है, कोई साइंस फिजिक्स से है,
नहीं है। सो हमारे पास में मतलब कि हम क्या करते हैं यहाँ पर कि हम जब रिसर्च करते हैं, बिकॉज यू आर दी न्यू स्टूडेंट्स देयर, और हम जब रिसर्च करते हैं यहाँ पर, तो हमारे पास में हम किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स को लेंगे। तो जो प्रॉब्लम हम ले रहे हैं यहाँ पे, दिस कैन बी कैटेगराइज इनटू द सेकेंडरी डेटा फॉर्म, किसी और का जर्नल। ठीक है दीपक, आपने मान लीजिए आपने मेरा कोई रिसर्च पेपर लिया और आप उसी पे काम करना चाहते हो, तो इसका मतलब कि आपने एक मेरा रिसर्च पेपर लिया, दैट इज सेकेंडरी फॉर यू। अब उस पर आप कुछ नया काम करना चाहते हैं, तो कैन यू टेल मी लाइक किस तरह से रिसर्च का काम किया जाता है? इज एनी आइडिया फॉर यू? So, please pardon your question again. I'm not getting that. सो माय क्वेश्चन इज दैट, आप जानते हैं रिसर्च में आपको क्या करना होता है और कितने Yeah, so पेपर्स, किस तरह के पेपर बनाए जाते हैं यहाँ पे? yeah, it's like if I'm doing experimental studies, review studies and all. So before that, I have to collect all the reviews articles. So it's like if I'm doing your research, आपने कोई research किया है, उसको मेरे को करना है, मेरे को उसमें modification करना है, तो I have to find the fault, वहाँ पर क्या gap है, research gap, and after that उस एंड data को मैं किस तरीके से utilize करके और plus मैं क्या नया data उसमें add on करके उसको modify कर सकता हूँ. in the similar way, like for the management, for the education students, for the other students, like what to do in a research, okay? You have to, it is not a limited part. आप कुछ भी और कितना भी नया कुछ कर सकते हैं यहाँ पे, है ना? आप जैसे मान लीजिए कोई एक्सपेरिमेंटल स्टडी कर रहे हैं, आप कोई सर्वे से रिलेटेड काम कर रहे हैं यहाँ पर, तो आपको उसमें नए कंपोनेंट्स को इंट्रोड्यूस करके और देन यू हैव टू मेक योर रिसर्च, एंड देन जितना आपके रिसर्च में आपके जो नए फैक्टर्स होंगे, जितना नया वर्क होगा, उतना ही आपका वो इम्पोर्टेंट होगा आपका पब्लिकेशन के लिए, उतनी जल्दी वो अच्छा पब्लिश भी होगा। ठीक है, दिस इज द पॉइंट। नेक्स्ट, you see friends, there is a table you see, in which here just I have given you some differences between the primary and the secondary data. You see this one students, okay? So look at here, आप इसको पढ़िए वन बाय वन, क्या क्या डिफरेंसेस हैं हमारे पास में। आप सभी स्टूडेंट्स इसको पढ़िए एक बार। आई हैव गिवन द 9 डिफरेंसेस देयर। सबसे पहले जैसे आपने बोला फर्स्ट पॉइंट में मीनिंग, द प्राइमरी डेटा मीन्स द फर्स्ट हैंड डेटा गैदर्ड बाय द रिसर्चर हिमसेल्फ और हरसेल्फ, while the secondary data means these are the data collected by someone else earlier. Second means the data form. The primary data means are the real time data, is it? And it is here past time data. Secondary data means past time data, क्योंकि वो तो किसी और ने ऑलरेडी इसको इन्वेंट कर लिया है, आप तो केवल उसको स्टडी कर रहे हो, ठीक है ना? जबकि प्राइमरी डेटा जो है वो अभी रियल टाइम डेटा है, अभी प्रेजेंट डेटा है हमारे पास में, जो कि आपने भी पब्लिश भी नहीं किया है या आप इसको पब्लिश करने जा रहे हो। थर्ड पॉइंट, प्रोसेस। एंड प्रोसेस का मतलब कि आपका कितना इसमें आपको मतलब कि इसमें टाइम लग सकता है यहाँ पर। जस्ट सेकेंडरी डेटा मीन्स क्विक एंड ईजी, एंड प्रोसेस में फर्स्ट आपका प्राइमरी डेटा मीन्स वेरी इन्वॉल्व। इसमें आपका कितना भी आपका प्रोसेसिंग लग सकती है यहाँ पर, आप जल्दी कलेक्ट कर सकते हैं, आप लेट कलेक्ट कर सकते हैं, और इसमें आपके अकॉर्डिंग इसमें बहुत टाइम भी लग सकता है आपको डेटा कलेक्ट करने के लिए। सोर्सेज, सोर्सेज हमने ऑलरेडी बता दी यहाँ पर कि इसके क्या क्या हमारे पास में इसके सोर्सेज हैं यहाँ पर, जिससे बाय विच यू कैन कलेक्ट योर डेटा। कॉस्ट इफेक्टिवनेस, इसमें हमारे पास एक्सपेंसिव पड़ेगा प्राइमरी या सेकेंडरी? बोलो फ्रेंड्स, विच वुड बी मोर लाइक एक्सपेंसिव, प्राइमरी और सेकेंडरी? प्राइमरी। Primary would be more expensive because ultimately you are going to give your just valuable time, and lot of work is to be made for this. तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कहीं हो सकता है सर्वे के लिए जाना पड़े, आपको दूसरे स्टेट जाना पड़ सकता है, आपको एक्सपेरिमेंटल स्टडी के लिए आपको कुछ महंगे इक्विपमेंट्स, केमिकल्स वगैरह यूज करने पड़ सकते हैं आपको। So definitely it would be much more expensive as compared to secondary data. And in the similar way, like you can see the other differences. Collection time, it is long, it is short.
specific, always specific to the researchers need। इसमें क्या है, हमारे पास रिसर्चर नीड के अकॉर्डिंग होता है और ये रिसर्चर नीड के अकॉर्डिंग नहीं हो सकता है, ये हमारे पास में डिफरेंट भी हो सकता है हमारे पास में सेकेंडरी डेटा। यानी कि हमें जो चीज चाहिए, जैसे मान लो अपने को कोई टॉपिक पढ़ना हो, यदि आप मेरे से पूछें यहाँ पर कि सर विच बुक शुड बी प्रेफर्ड फॉर दिस सब्जेक्ट क्वांटिटेटिव एंड स्टैटिस्टिकल डेटा, जानते हो कौन सी बुक इसके लिए अच्छी होती है? सर SP गुप्ता। SP गुप्ता। और कोई? CR कोठारी, रिसर्च मेथोडोलॉजी। Sir, and botany also. है ना? Botany. So there are many books, SP गुप्ता, SC गुप्ता, VK कपूर, रिसर्च मेथोडोलॉजी की आती है बुक हमारे पास में, एक भी आपका ये कोठारी की बुक आती है यहाँ पे, CR कोठारी की। सो देयर आर मेनी बुक्स इन दिस फील्ड, इन दिस स्ट्रीम। लेकिन जब आप देखोगे यहाँ पर तो अल्टीमेटली हमारे पास में किसी भी बुक में पूरा मटेरियल नहीं होता है ना, पूरा स्टडी मटेरियल नहीं होता है हमारे पास में। तो अल्टीमेटली सेकेंडरी डेटा मीन्स, जिसमें हम ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि इट इज नॉट द स्पेसिफिक वन। प्राइमरी तो आपका स्पेसिफिक वन है, आपको किससे क्या आपका ऑब्जेक्टिव है उसके अकॉर्डिंग आप काम करते हैं। लेकिन आपका सेकेंडरी डेटा में क्या होता है कि आपको उसमें बहुत सारी आपको एक्स्ट्रा चीजें भी आपको मिलती हैं जो आपको अनरिक्वायर्ड है, नॉन रिक्वायर्ड है आपको, वो भी आपको मिलता है। क्लियर? नेक्स्ट अवेलेबिलिटी की बात करें अपन, तो हमारे पास में ये जो आपने देखा प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा को आपने देखा यहाँ पर, तो ये हमारे पास में किस फॉर्म में यहाँ पर है? जस्ट वी कैन सी हेयर अवेलेबिलिटी। तो प्राइमरी हमारे पास में क्रूड फॉर्म में होता है और जो सेकेंडरी डेटा है हमारे पास वो रिफाइंड फॉर्म में आपको मिल सकता है, जो आपको पर्टिकुलर जिस वे के लिए चाहिए आपको यहाँ पर। एक्यूरेसी की बात करें अपन यहाँ पर, एक्यूरेसी हमारे पास में इसकी जो है वो ज़्यादा है प्राइमरी डेटा की, और उसके लिए एक्यूरेसी कम होती है हमारे पास में। एक्यूरेसी का मतलब कि रिलायबिलिटी, आप किस पे कितना ट्रस्ट कर सकते हो। इज इट राइट? फिर आता है हमारे पास में यहाँ पे, आपने डेटा की आपने डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, डेटा को आपने भी बताया कि डेटा के बारे में, और लाइक इन द सिमिलर वे अब आप डेटा का क्लासिफिकेशन पढ़ते हो। क्लियर? व्हाट इज क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा? आपके सिलेबस में टॉपिक है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, टेबुलेशन ऑफ डेटा। जानते हैं? कितने स्टूडेंट्स ने यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स पहले पढ़ी है? पढ़ी होगी ना आपने अपने BSc लेवल पे। जो स्टूडेंट फार्मा के उन्होंने देखा होगा आई थिंक। ये सर पढ़ी है। So are you comfortable with this subject in calculation part? Yes sir, yes sir. Okay, very good. So now just students, we are taking this part of like classification of data. Means the arrangement of data into homogeneous groups or the classes according to some common characteristics present in the data, and this is called classification. Okay, so just when we arrange our data according to like with some same characteristics, okay, just present in the data, then it is, this arrangement is called the classification of data. And this classification of data can be just given into various bases. The first basis is here qualitative basis. Qualitative basis, second is quantitative basis, third is geographical basis, and fourth is chronological basis. Chronological basis. So in the like geographical basis, you see what is geographical basis means. We are just separating our data. We are On the basis classifying of our data location. on geographical base. So how will you define it? When data are classified by the geographical regions or the locations, okay, like states, okay, next cities, countries, provinces, okay, Region. according to regions.
So this kind of classification of data is known as a geographical just classification. Is Yes, it sir. clear? Yes, sir. Means we have classified our data according to their geography. Yes, Then sir. second is chronological data, means that is on the basis of like time. When the data are classified or arranged by their time of occurrence. हमारा Oh, जो डेटा है वो टाइम के अकॉर्डिंग किस तरह से लाइक जस्ट वी आर गिविंग हियर वी आर डिफाइनिंग और क्लासिफाइंग अकॉर्डिंग द जस्ट टाइम ऑफ अकरेंस के बेसिस पे कैसे कैसे वो टाइम उसके बेसिस पे आपका हुआ ओके हम अपने डेटा को इस तरह से करें लाइक कैन यू गिव एनी एग्जांपल कैन यू गिव एनी एग्जांपल फॉर दिस सो sir, for chronological. यस माय क्वेश्चन इज फॉर क्रोनोलॉजिकल Sir, अरे जब months, आप हाँ like production month. of any crop okay Mm, between so like suppose here from 2015 to 2024 2023 yes, sir. okay like Yes, sir. the GDP of India okay from Yes, sir. 2000 suppose And 10 per to capita income. 2020 Per capita income. per capita income and in this way when the data are just classified on the base of their chronology means on the Yes. base of time then it is Yes, known sir. as like chronological basis in the similar way you can just give your classification on the basis of quantitative and qualitative. Quantitative means when the data are classified by quantitative characteristics. Okay, like particular numerical value का according अपन दे यहाँ पर जैसे Sir, height, number of हाँ, students in class. like number of students in a class, okay, Mm, mm. like height of the students, Age weight of of the this students, okay, age like age group of age group students. of the members in a family, okay, income level. So Yes. these are like qualitative basis. Next is quantitative basis. So how will you give quantitative basis or qualitative basis? Sir, income groups of employees. Income. That is a quantitative. And what is like the qualitative basis purpose? Quality. Literacy rate. Educated, Just illiterate, literate. look at here. I have given some examples when the data are just classified on the base of On the basis of like literate. quality. Okay. Number of That illiterates and illiterates. exactly like literacy level, intelligence, okay, Mm. gender. So these are the like basis of classification. Just in Male, the female. Number of males, females in a हाँ एग्जैक्टली employees. जेंडर Yeah. जेंडर हो गया ना आपके Mm. ठीक है ना जेंडर हो गया हमारे पास में Mm. Yes, sir. Like this, क्लियर sir. है एवरीवन नीलम Sir, sir. नीलम तनु इज एनी डाउट देयर Yes, sir. सो व्हाट इज द डाउट No, sir. Sir, if in the chronological, there should become calendars also, school calendars and such things. यस यस Okay. हु इज फ्रॉम हिंदी मीडियम Sir, I am from English medium. ना ना हिंदी मीडियम से कौन है यहाँ पे इज एनीवन फ्रॉम हिंदी मीडियम भारती नहीं अनुष्का सबको समझ में आ रहा है ना इसमें Sir, in हाँ sir in chronological, there comes also bibliography references. हाँ bibliography according to just when you are arranging your data just according to like years okay years of publication Okay. Yes, yes. okay so
आप एक बार म्यूट कर लीजिए सभी अपने को. So now next we are going to discuss so look at here friends, tabulation of data. So what is tabulation of data? You see, The data in table form. means when the data are arranging or placing, means just in the tabular form, that is called tabulation of data. Means okay, the process of the placing classified data on the basis of table form or the tabular form, that is called the tabulation of data. And okay, a table means a symmetric arrangement of statistical data in rows and columns. And can you tell me what is benefit of this tabulation of data? We can interpret easily, analyze easily. Exactly, you are in the form of like of analyzing your data very easily. Okay, and और इसके अलावा कोई? Is there any other like It reason why helps Sir, in if, it helps in calculation. yes, it yes, helps exactly. in You're right. calculation and We can just apply the the formula directly if it is the data is in available table form. and the data can be just searched by easily. Okay, when we are just like जैसे हमको एक्सेल पे डेटा देते हैं यहाँ पर और हमें कोई चीज को सर्च करना तो बहुत इसको एक मतलब कि सीधे से कंट्रोल F पे जाकर इसको अपन सर्च कर सकते हैं. क्लियर? एंड मतलब कि हमारे लिए आसान हो जाएगा कि डेटा को आपको सर्च करना और उसको आपको पर्टिकुलर एक तरह का एक से एनालिसिस करना आपके लिए. क्लियर? यदि आपने डेटा को टेबलाइज फॉर्म में नहीं किया है then it would be much difficult to give the like results. कौन कौन से टाइप के टेबुलेशन होता है बताइए. कौन कौन से तरह के टेबुलेशन आप जानते हो? Is anyone know? बोलो दीपक. Sorry, sir, I don't have any idea regarding that. Is anyone else who can give this the various types of tabulation of data? Bharti, will you answer? No? So look at here. So just the tabulation of data can be given in three ways. These can be just divided into three ways. First is simple tabulation or the one-way tabulation. Second is double tabulation or the two-way tabulation. And the third one is known as the complex tabulation, and it is also known as manifold tabulation. Clear? So what is simple tabulation? मीन्स जब हम अपने डेटा को एक ही डेटा की करेक्टरिस्टिक के साथ में आप शो करते हो. क्लियर? व्हेन द डेटा आर प्रेजेंटेड आर tabularized with only one characteristic. Is it clear? Then it is called simple tabulation or one-way tabulation. Means when the data are tabularized, tabulated to one characteristics. For example, like the tabulation of data on the population of the world classified by the one characteristic like the religion is an example of a simple tabulation. ठीक है ना? जब हम अपने डेटा को मान लीजिए सपोज करो हमें अपने पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन को डिवाइड करना है, कैटेगराइज करना है, टेबलाइज करना है यहाँ पर किस बेसिस पे, यहाँ पर उनके रिलीजन के बेसिस पे. यहाँ पर उसको क्या बोलेंगे अपन यहाँ पे? वन वे टेबुलेशन. क्लियर भारती? Yes, sir. सो मतलब कि आपने एक ही कैरेक्टरिस्टिक लिया और वो लिया आपने रिलीजन.
पूरी पॉपुलेशन के लिए, है ना? तो sir. like what is population of Hindus in our this whole world? हिंदूज की कितनी पॉपुलेशन है, देन मुस्लिम्स का कितना है, क्रिश्चियंस का कितना है, व्हाट इज पॉपुलेशन ऑफ लाइक द अदर रिलीजन्स, लाइक हमारे पास जो और रिलीजन्स होते हैं पे पार्सियन और इसके अलावा पे सिख। तो लाइक बिकॉज दिस इट इज गिवन इन द ओनली वन कैरेक्टरिस्टिक एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड वन वे टेबुलेशन। अब हम बनाते हैं टू वे टेबुलेशन। तो टू वे टेबुलेशन का मतलब क्या होगा हमारे पास में यहाँ पर, जिसमें आप अपने डेटा के दो कैरेक्टरिस्टिक के साथ उसको प्रेजेंट करना चाहते हो। क्लियर? व्हेन द डेटा आर टेबुलाइज्ड विद टू कैरेक्टरिस्टिक्स देन इट इज कॉल्ड टू वे टेबुलेशन। सो कैन यू गिव एनी एग्जांपल? आप अपनी डेटा की मेन दो पॉइंट्स को, दो कैरेक्टरिस्टिक्स को वहां पे मेंशन करना चाहते हैं। कैन एनीवन गिव आंसर? No? Sir, age and gender of Again, you tell age and gender. age and gender. So how will you just give this example in proper way, Bharti? Number of Like, female employees, male female employees. ओके, सो जैसे अभी हमने बोला कि हमने एक एग्जांपल ये भी आप दे सकते हो। अभी हमने एक एग्जांपल डिस्कस किया यहाँ पर, लाइक द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, ओके, अकॉर्डिंग टू रिलीजन and according to gender. Yes, means sir. means what is population of male and female And what is female? and with religions. Yes, ठीक है ना? sir. So two characteristics are just there, and this kind of tabulation is called two-way tabulation. Two-way tabulation. I think clear everyone? Yes, sir. अनुष्का, आप नहीं बता रहे हो कुछ भी? Are you there or not? Tanu Dixit? Okay, so let us see what is the third and the last way of tabulation. This is called complex or the complex and the manifold tabulation. When the data are tabularized according to many characteristics. So what do you mean by many characteristics? Minimum there should be three. क्योंकि वन वे में आपने एक पढ़ा, आपने टू वे में दो पढ़ा आपने, तो कॉम्प्लेक्स में कितना होना चाहिए? मिनिमम हमारे पास में 3 होना चाहिए, ठीक है ना? So when the data are tabulated according to many characteristics, or you can say with 3 or more than 3 characteristics, then this is called three-way. It is called complex tabulation or the manifold tabulation. So can you give any example for this? Can anyone give example for the complex tabulation with 3 characteristics means? Look at this one. Tabulation of data on the population of the world classified by the 3 or more characteristics like religion, like gender, and like the literacy, okay, etc. and is example of a complex tabulation. तो 3 हमारे पास में characteristics ले लिए हमने यहाँ पर, किसके लिए? The population of world or the population of employee in a company, okay, the strength of students according to like literacy, religion, and gender. So this is called complex tabulation. Clear? Yes, sir. sir. So these are the like topics in your syllabus, okay? और आप इसको पढ़िए, ठीक है ना? और इसके नोट्स भी बनाते जाइए साथ में, सॉफ्ट कॉपी में या हार्ड कॉपी में, जो भी आपको करना है, ठीक है?
Next, what is coming there? Look at this one. Frequency and frequency distribution. So what do you mean by frequency? Yes. Anything which is repeating. Anything which is repeating is called frequency. Is it? Yes. Yes. That is called frequency. So the frequency of any value is the number of times the value appears in a data set, okay, or in a data series. Means when a particular value of data is repeated more than one time, then how many times it is repeated is known as its frequency. So from the above examples, हम इसको इस तरह पे दे सकते हैं और भी पर्टिकुलर बहुत सारे इसका अपन एग्जांपल दे सकते हैं यहाँ पर लाइक कोई एग्जांपल बताओ स्टूडेंट्स आप लोग देख के सोच के all you are scholars, so you should know here how to make some examples, क्योंकि हम बहुत चीजें याद नहीं करते हैं, हमें तो केवल समझना होता है, उसको एग्जांपल में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है ना। तो आप बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के लिए, लाइक मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स, ओके, आप इसको पर्टिकुलर कैटेगराइज कर दें यहाँ पर, ठीक है ना, क्लास इंटरवल के फॉर्म में, और फिर कितने स्टूडेंट्स उस क्लास में आ रहे हैं हमारे पास में यहाँ पर, तो आप इसको दे सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आपने बोला 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 and 40 to 50. Is it? So the number of students who are getting marks between 0 to 10, that is the strength of those students जो उसमें आ रहे हैं यहाँ पे। ऐसे आपके पास में आप 10 से लेके 20 की कैटेगरी में आप इसको डिफाइन कर सकते हो, ठीक है ना। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब कितना रहेगा हमारे पास में, the number of students, strength of students. Is it working? Yes, sir. And what is frequency distribution? आप अक्सर ये सुनते हैं, यहाँ पर देख आपने सुना होगा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी जानते हो क्या होता है? Statistical distribution. Sir, the So what? process of preparing the So what is meaning of like this? Suppose we are discussing about here frequency distribution. So how will you define it? Look at this. I have defined already here. You can see on your screen. In statistics, a frequency distribution means a list or a table or a graph that displays the frequencies of the various outcomes in a sample. Okay. Suppose you are taking a sample and just this sample is is converted or showing here the frequency of various outcomes. Whatever is an entity, आपकी जो भी entity यहाँ पर जिसको आप शो करना चाहते हो यहाँ पे, जैसे मान लीजिए हमने बोला यहाँ पे हाइट ऑफ द स्टूडेंट्स को बोला हमने यहाँ पे, ठीक है। तो यदि हमने हाइट्स ऑफ स्टूडेंट्स को बोला और हमने ये बताया कि इतने हाइट के इतने स्टूडेंट्स हैं, इतने हाइट के इतने स्टूडेंट्स यहाँ पर, तो अल्टीमेटली दिस इज अ मेथड by which you are just showing here the various the frequencies of the various outcomes. Clear? And it may be in the form of a table, in the form of a graph, or in the form of a list. So that is called the frequency distribution. So this is the frequency distribution means by which you can just show the frequencies of various outcomes in a tabular form, in a graphical form, in a just listed form, like you can see the example. ठीक है। And one more example I would like to give here. देखिए आपको मैंने यहाँ पे बार डायग्राम दिखाया आपको यहाँ पर, और it is a frequency distribution graph showing here the bar diagram. Clear? तो इस तरह से आप अल्टीमेटली अपने जो आउटकम्स है उसकी फ्रीक्वेंसी को शो कर सकते हैं यहाँ पर। Clear, students? So now you can see the time is going to finish. Is any question?
No, sir. No, sir. So, okay, students. So, right now we are going to finish our class. ठीक है ना? अब हम next week मिलेंगे क्योंकि कल हमारी क्लास नहीं है. अब हमारी क्लास Thank you, sir. मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे को आती है. ठीक है? Okay, students. Okay, sir. Okay, So we thank you, will sir. meet again tomorrow. Not tomorrow. On Monday. Okay, Thank you, students. sir. Thank you, Welcome. sir. Okay, अच्छा.